दुनिया है तू ही। हेलो गाइस। एक ट्रेड चलने लग रहा है जो 19 पे सेल है मेरा। उसको कर दूंगा मैं ब्रेक इवन। एंट्री ओवर हियर। इसका स्क्रीनशॉट जो प्रॉफिट का होगा, लॉस का नो लॉस तो नहीं होगा, मैंने ब्रेक इवन कर दिया 10 पिप्स पे। जो भी होगा आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीनशॉट। एंड लग रही है एंट्री का रीजन क्या है वो भी बता। क्यों इस तरह से मुझे परेशान करता है मुझे नहीं पता। सेल की एंट्री सिंपल एंड इजी दैट I put took this entry on 29 few second। मेरा ही फेवर में हूँ। ट्रेस का ऐसा लगा देता हूँ मैं। 54 pips of course। So this is totally a blunder। We are positive guys। Again I took this selling here। I won which is I was yes obviously ये कुछ नहीं थी। 2507 2507 पे I'll be closing। देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। We are running 19 pips right now। अच्छे से close। I'll close it by 40 pips। 35 is running। I would like to shift my SL to B। भी न्यूज से पहले इन द न्यूज इट वाज रनिंग, पर मैंने बी कर लिया था एंट्री को, इसलिए वो SL पहले वाला बी 7 राइट नाउ। अगर वो इज पिप्स सेम एज ऑन द 15 मिनट्स आल्सो। 15 मिनट को बहुत क्विकली टैप इट एंड वेंट डाउन। नो इश्यूज। कोर्स यू विल सी इट ऑन द। ये बहुत ब्लंडर कर रहा होगा और थोड़ा सा पंप आएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। आई एम श्योर अबाउट दैट। इज ऑल माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बोलता। और रनिंग प्रॉब्लम है आई गेस। And the kids, of course, are running 19 pips, 20, 25 pips. Logic here. And I took this entry. इसके 15, 29.5 था तो वो उड़ गया। और now again I took one more sell entry which is running 16, 17 pips. Struggling और आएगा for sure। Definitely आएगा। News। I think I should close it। Yes, I close it। So बस मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा था, इसका मतलब if you could see or not, लाइव प्रॉफिट से गाइस। लाइव प्रॉफिट से लाइव लाइव प्रॉफिट सामने की मैं पता पता नहीं मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल पाऊंगा या नहीं, इसलिए दिखा दे रहा हूँ। पॉज करके देख लेना। लाइव एंट्रीज गाइस। बट फॉर राइट नाउ विल बी स्टॉपिंग ओवर। इट वाज नॉट गुड फॉर गोल्ड दैट्स व्हाई वुड फेल डाउन। थोड़ा सा जो है 5 pips on the close was right। वेरी क्लियर, वेरी राइट, वेरी करेक्ट ऑफ कोर्स। फॉलो करो और आपको भी होती तो